be prepared for all of these things. Now, let's talk about the best tool that you all have at your disposal. To prepare for your entrance exam, newspaper is very, very important, not just in your general awareness, but your entire preparation. When we talk about newspaper, why should you read newspaper? Of course, every student right now studying it at NLSIU, Nalsar, NLU Delhi, everyone will tell you the same thing, that newspaper reading is super duper important, and we did that. Right? You can read any newspaper that you can get your hands on, any English daily, Times of India, Hindu, the Indian Express, whatever you can find at your nearby places, right? Start reading, build reading habit. Once you are done, once you're bored, let's say in 3-4 months you are bored with a particular newspaper, डेफिनेटली आप शिफ्ट कर सकते हो. जैसे मान लीजिए यू स्टार्ट विद द हिंदू, यू गेट बोर्ड क्योंकि थोड़ी इंग्लिश टफ है, थोड़ा स्विच कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लिया आपने. So this is something which you can definitely do, right? But do not leave it all together. Not everything is to be read, right? You have to be selective here, right? And selective कैसे बनेंगे? By attending all the classes, of course, by attending all the sessions, of course. So if you're someone who's watching us and is yet to subscribe, अरे भाई बिल्कुल गलती मत करना, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और लाइक का बटन दबाने में भी कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से लाइक भी कर देना भाई, हमें भी पता चले मजा आ रहा है, आप सबको समझ में भी आ रही है चीजें. So target is to complete the newspaper within 30 to 60 minutes, right? तो ये भी जरूरी है समझना. अब न्यूज़पेपर कौन सा रेकमेंड करते हैं हम? द हिंदू वी रेकमेंड, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, विच एवर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. आपके एरिया में जो भी मिलता है. सबसे जरूरी सोर्स आपके लिए क्या है? ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड योर क्लास नोट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे जरूरी सोर्स क्या है? इनके अलावा वो क्या है? देखिए आप, CLAT Ignite मैगजीन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. द गवर्नमेंट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनकी वेबसाइट, द गार्डियन, द वायर, दीज आर इंपॉर्टेंट ऑनलाइन सोर्सेज. वायर से बहुत सारे रेगुलरली पैसेजेस आए हैं in the previous years, so very important these are. Apart from this, if you look at all these the past now तो 5 years हो गए, तो 5 साल की अगर हम 3 से 5 साल की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें क्लैट की, तो ये लगातार यहीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं. These are the sources. So what are the advantages of reading newspapers? Guys, let's talk about it. Number one, it improves our vocab. Of course, helps us in our vocab building for sure. It improves our English language. Definitely, it helps us, in terms of confidence. We are more aware about things. Wherever we go, we have an opinion about things because we have read about things. So improves our reading skills and our logical skills as well, right? It gives us reasoning, right, which is absolutely super duper essential for an exam like CLAT, ALET and any other exam. It makes you grammatically sound with perfect सेंटेंस फ्रेमिंग एज वेल. इतना ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें पढ़ते हो आप, आदत पड़ जाती है ग्रामेटिकली करेक्ट होने की. मेक्स यू अवेयर ऑफ द करंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स. टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन एग्जाम यू नीड टू लर्न कॉन्स्टेंटली. लेट्स understand this very simply. 20,000 plus words there are in the entire paper, right? More than 20,000 words there will be. Out of these 20,000 words, जो 20,000 से ज्यादा शब्द होंगे, आपको क्या ध्यान रखना है? इनमें 20,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं. यहाँ पे आपको 120 minutes में you have to read all of them and then you have to mark the answer as well in your OMR. So mark answers plus reading, all this is definitely a time taking task. तो इस वजह से practice is important and regular reading of newspaper is nothing but building your habit of completing 20,000 words in the span of 90 minutes. This is our goal. We have 1 year to do this, and once we achieve this, we will be a force which nobody can defeat. ये आपको